and the only label you can give is Muslim. So I don't call myself Shia, Sunni, I call myself Muslim. So you say today to your wife, I met Dr. Zakir Naik who calls themselves a Muslim. And I'm neither against Sunnis or neither against Shias. I tell all the Muslims, whatever name they call themselves, come back to Allah and His Rasul. Now, when I अस्सलाम वालेकुम जी आए नु ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਮ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਸ਼ਹਿਰ ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬਾਬਾਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਫਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਵਾ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਤਿਸ਼ੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਚੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਨੇ ਆ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, फ़िरका लोगों की एक जमात को कहा जाता है और फ़िरका बंदी से मुराद वो इख्तलाफ है जो उसूल दीन और अकायद दीन में हो। मुसलमान की सादत इसी में है कि हर काम में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करे। इस मुक़द्दस उसूल को नज़रअंदाज कर देने से इस्लाम में मुख्तलिफ फ़िरके पैदा हो गए कि तामुल सहाबा और तफसीरात सहाबा को नज़रअंदाज करके अपनी तरफ से जो जी में आया उसको कुरान और सुन्नत का मफहूम करार दे दिया। कुरान करीम और हदीस मुबारका में फ़िरकाबंदी की ममानियत और मुज़म्मत की गई है और हमारी आज की वीडियो का मौजू भी यही है। नाज़रीन, दीप मिश्रा नामी शख्स ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सवाल किया कि मैं हिंदू हूँ और मैंने मुसलमान लड़की से भारत में शादी की है। मैंने उसको कहा कि ज़ाकिर नाइक के इज्तिमा में जा रहा हूँ तो उसने फौरन कहा कि वहाँ न जाना, वो शिया लोगों को बुरा भला कहते हैं। मेरी बीवी असल में शिया है और उसको डर है कि आप मुझे शिया के बारे में बुरी बातें बताएंगे और फिर आप मुझे छोड़ देंगे। उसने दूसरा सवाल भी किया और पूछा कि अगर हम कहते हैं कि हर चीज खुदा है और खुदा से ताल्लुक रखती है तो उसने हमें क्यों पैदा किया है और हमें क्यों अपनी इबादत का हुक्म देता है और हमें क्यों कहता है कि उसकी इबादत में मुशक्कत करें। क्यों सिर्फ इंसानों को ही अपनी इबादत का कहना है, जानवरों या दूसरी मखलूकात को क्यों नहीं कहता उसकी इबादत करें। My question is actually I am a Hindu and I have married a Muslim girl in India and inshallah she will be here in Saudi Arabia in coming next month. You know what, when I told her that I'll be going to visit Dr. Zakir Naik's speech, so she told, please don't go to him. He says bad about Shias. And she's a Shia actually. So she told, no, don't go to him. And her mother-in-law also told, no, please, you don't go. If you go to him, he will tell you bad about Shia and you will leave me. So that is the first doubt which I'm having in my mind. And the second thing is, I have a generic question in the sense that if we say that everything is God and everything belongs to God in Hindu and Muslim religion, so why God wants everybody of us to worship Him? Why is He created us in any forms of religion? When you talk about the creation, why is He created us? Why He wants us to worship? Why He wants us to take so much of pains to worship Him? And why He doesn't ask animal or anybody else to worship Him? Why only human beings? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब खुशगवार मूड में देते हुए कहा कि आपसे आपकी बीवी ने कहा कि मेरे पास नहीं आना, फिर भी आपने उनकी हुक्म अदूली की। क्या आप उनको प्यार नहीं करते? लोगों के चेहरे पर यह सुनकर मुस्कुराहट फैल गई, यहाँ तक कि सवाल करने वाला भी हंसे बगैर न रह सका। ये मनाजिर देखिए। coming back to your question, so the first question you asked that your fiancée or your wife? My wife. Wife, oh, you already married her. Fine, your wife told you not to come for my lecture because I'm against Shias, and yet you disobeyed her. You know, you love me so much. I appreciate that. But
इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि शिया या सुन्नी का कुरान पाक में कोई जिक्र नहीं। कुरान कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफरके में न पड़ो। अल्लाह ने कुरान में खबरदार किया कि अगर कोई मुसलमानों में तफरका डालने की कोशिश करता है तो आप उसको कुछ न कहें, अल्लाह कयामत के दिन उनको देख लेगा। The word Shia doesn't exist in the Quran. See, the Shia Sunni is not mentioned in the Quran. The Quran says in Surah Imran, chapter 3, verse number 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. We Muslims should hold to the rope of Allah strongly and be not divided. And Almighty God says in the Quran in Surah Anam, chapter number 6, verse number 159, that, O Prophet, anyone who makes sects in the religion of Islam, you have nothing to do with him. Allah will look after his affairs on the day of judgment. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर कोई इस्लाम में तफरका डालने की कोशिश करता है तो वो इस्लामी तालीमात और अल्लाह के हुक्म की हुक्म अदूली कर रहा है और कुरान और सुन्नत से दूर जा रहा है। तो अपनी बीवी को बताइए कि जाकिर नाइक ने कहा कि कोई शिया सुन्नी नहीं है। कुरान में कहा गया है कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, तो आप सिर्फ कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद अहादीस की ही पैरवी करें। So making sects in the religion of Islam is prohibited. So anyone who divides the religion of Islam into sects, he is going away from Quran and Sunnah. So tell your wife that Dr. Zakir Naik said there is nothing like Shia Sunni. Quran says, Atiullah wa Atiur Rasul. Obey Allah and obey the Messenger. What we have to do is we have to follow the Quran and the sayings, the authentic sayings of Prophet Muhammad, peace be upon him. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं अपने आप को शिया या सुन्नी नहीं, सिर्फ मुसलमान कहता हूँ। आप भी अपनी बीवी को बताइएगा कि जाकिर नाइक खुद को शिया या सुन्नी नहीं बल्कि सिर्फ मुसलमान कहते हैं। मैंने शिया के खिलाफ हूँ, ना सुन्नी के, ना ही उनके साथ हूँ। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी तो शायद इसलिए कि वो बताई गई इस्लामी तालीमात के मुताबिक अमल नहीं कर रहा। तो आप अपनी बीवी से पूछिएगा कि क्या वो कुरान और सुन्नत पर अमल कर रही हैं। And the only label you can give is Muslim. So I don't call myself Shia, Sunni, I call myself Muslim. So you say today to your wife, I met Dr. Zakir Naik who calls themselves a Muslim. And I'm neither against Sunnis or neither against Shias. I tell all the Muslims, whatever name they call themselves, come back to Allah and His Rasul. Now, when I give answer, some of the Muslims who may be practicing things against the Quran and Sunnah may feel offended. So you ask your wife, are you following something against the Quran Sunnah? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप मुझे न माने, मेरी पैरवी न करें, बल्कि कुरान और सुन्नत की पैरवी करें। अपनी बीवी को बताइएगा कि शिया का लफ्ज कुरान में कहीं नहीं लिखा है। If you are not, then why are you afraid of Dr. Zakir Naik? If you are, yes, you have to change and come back to Quran Sunnah. Don't follow what Zakir says. Zakir is zero in Islam. Atiullah, Atiur Rasul. Obey Allah and obey the Messenger. So tell your wife, if she is following anything against the Quran and Sahih Hadith, then she has to rectify herself. She should call herself a Muslim because the word Shia is nowhere mentioned in the Quran. Well, I do appreciate that you love your wife, but you love me also, mashallah. Therefore, I have come for my talk. इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके दूसरे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लोग पूछते हैं कि हमें क्यों अल्लाह की इबादत करनी है, तो हम बेशक इबादत करें या नहीं, अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं कहता हूँ अल्लाह अकबर, जिसका मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो मेरे कहने से पहले ही अल्लाह बड़ा है, मेरे कहने के बाद अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं किसी को अजीम कहता हूँ तो उसका मतलब ये है कि उसकी बड़ाई का एतराफ कर रहा हूँ और उसके अहकामात मानने के लिए तैयार हूँ। That we worship God, we praise Him. People ask me, why do you say Allahu Akbar? Why you have to pray to God? I said, see, in Islam, whether we pray to God or not, it makes no difference to Allah subhanahu wa ta'ala. When I say Allahu Akbar, Allah is the greatest, He is already the greatest. Welcome. By me saying Allahu Akbar, He won't become greater. Why do we say? Why do we say? Because when I praise anyone, whenever I call anyone great, it's a human tendency. I try and follow his commandments. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अल्लाह की इबादत की वजह ये नहीं कि वो हमारी इबादत से मजीद बड़ा बन जाएगा, बल्कि ये है कि कुरान में हमें हुक्म दिया गया है और इसका मतलब है कि हम अपनी मर्जी और मंशा को अल्लाह के हुक्म पर छोड़ रहे हैं। कुरान में लिखा है कि हमने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और हमें क्यों अल्लाह की इबादत करनी है, इसके लिए हमें एक किताब दी गई है जो हमारी रहनुमाई के लिए है।
जब अल्लाह की अहकामात मानते हैं तो ये हमारे लिए ही बेहतर है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको हिदायत देता है तो आप उसको मानते हैं। इसी तरह जब अल्लाह ने हमें हिदायत दी कि इबादत करो तो ये हमारे लिए ही बेहतर है। So the reason we praise Allah is not so that He becomes greater. When we praise Allah, the moment we praise Him, whatever commandments He gives in the Quran, we follow it. So first we have to identify who is our Almighty God. And then what He says we have to follow. That is the reason Muslim means a person who submits his will to Almighty God. Quran mentions in Surah Dariyat, chapter 51, verse 56, that we have created the jinn and the men not but to worship me. Almighty God has created us to worship Him. And the reason He wants us to worship Him because He has given us the criteria. This is the instruction manual for the human being. The good and bad for the human being. Now when we worship Him, when we praise Him, but naturally we have to follow His commandments. And when we follow the commandments of Almighty God, it is beneficial for us. Like for example, when you go to a doctor and the doctor gives you prescription, do you follow his prescription or not? Yes. Yes. Why? Because you're sick. He's the doctor. Similarly, Almighty God has prescribed us in the Quran and the Sahih Hadith what is good and bad for the human beings. When we praise Him, when we worship Him, but naturally we follow His commandments. If you don't believe the person is a doctor and if He gives you a prescription, will you follow it? No. So when you appreciate the doctor, you will follow his prescription. That's the reason we praise Almighty God and we worship Him so that we can be good practicing human beings. नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। माशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह। सुने ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਆ। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को तुसी ना जाना, वो शिया दे बहुत ज़्यादा खिलाफ ने, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਮਖਲੂਕ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਇਹ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਾਇਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੇ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਦਾਇਤ ਪਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇ ਚ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਓ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।